Ms. Anuradha Singhai, the Executive Director of the Center for Entrepreneurship Development, Madhya Pradesh, an autonomous body under the Department of MSME, Government of Madhya Pradesh, working on skill development and entrepreneurship. With over 21 years of post-qualification experience, Ms. Anuradha has expertise in legal and financial sectors, corporate social responsibility, entrepreneurship, training, livelihood, among others. Ms. Anuradha is known for her work in development sector reforms, gender equality, and women empowerment through the Purple March movement. She is also an expert on corporate social responsibility for the Ministry of Corporate Affairs of India and Tourism Consulting. She has represented India at various international forums, including the United Nations Office on Drugs and Crime and at the Center for Promotion of Imports in the Netherlands. We welcome you, ma'am, and look forward to have your insights. I now request Dr. Navneet Anand, sir, to please carry forward the conversation. Thank you, Vigya, and welcome, Srimati Anuradha Singhai ji. There couldn't have been a more multifaceted talent than you to have with us. A technocrat who made a lateral entry into the bureaucracy, and what an incredible experience you have had through all these years, Anuradha ji, and such a great privilege to have you here. Today is June 13th, 2024, and you are listening to BI Dialogue on Bureaucrats India, which is one of India's leading platforms celebrating stories of good governance. And today, as Vigya said, we have with us Mrs. Anuradha Singhai, the Executive Director of CEDMAP. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you so much, Navneet ji. So we have seen your journey has been dotted with many successes, varied experiences, and a lot more glory than a normal human being can anticipate. Now, what made you to make this shift to CEDMAP, leaving everything aside, or you carry all of these and make CEDMAP a more happening, more vibrant place, Anuradha ji? Yeah, so first of all, we need to understand what exactly is CEDMAP, or Center for Entrepreneurship Development, Madhya Pradesh. So CEDMAP is an autonomous self-funded body of state government of Madhya Pradesh, which comes under the Department of MSME. And the basic mandate with which it was formed 35 years back was to promote entrepreneurship and, you can say, livelihood. And when we talk about entrepreneurship, the general concept which comes in the mind is about starting a business or enterprise. But I would like to expand the definition to entrepreneurship in job also. So when we say entrepreneurship in job, a civil servant, whom I'll say is always an entrepreneur, because he or she enters into an area where lot of risk taking, lot of innovation, with the mandate of philanthropy, inclusion, and out of box thought process, and total dedication goes in. So that is why when we are talking about entrepreneurship, I will request you not to restrict to entrepreneurship in business, but also entrepreneurship as an employee in job as well. So you can see that the mandate is quite vast. And when I combine this job versus business, basically the objective, the mandate of CEDMAP is livelihood, to provide livelihood to the people of, especially the youth and women of Madhya Pradesh. That is the focus. And when you say what exactly is my role, why I came to this sector, so basically I'm a fellow of the Institute of Company Secretaries of India, and I had worked in the development sector also. So I had almost 21 years of experience in varied sectors, as you mentioned. So I thought that let us explore this avenue when you can work more with people, not with specific people, but people as a whole, and especially the disadvantaged group,
the poor people, the underprivileged one, for whom you can give your best. So that is why I felt that I should come here, and I reached here. So and when you say what exactly is my role here, my role encompasses everything. मतलब जिसको कहते हैं ना कि दिशा भी देना और दशा भी सुधारना. So giving the direction to the organization, to the state, especially in terms of the livelihood generation, in terms of employment, self-employment, enterprise creation, and thereby to improve the condition and make it self-sustainable, make the youth self-sustainable, make the organization self-sustainable, आत्मनिर्भर जिसकी हम बात करते हैं. So that concept we would like to we are working on. And CEDMAP also has a wing specifically for providing jobs. So we are basically the nodal agency for the state government of Madhya Pradesh for providing third-party contractual outsourced manpower to different government departments. So there also various discrepancies could be found across the nation. So when I joined, we tried to basically set up some standard operating procedures to synchronize things and how we can give and do more justice with the contractual employees in terms of giving full salary to them, depositing their PF ESIC timely, at the same time preventing the theft of GST. So we started the audit system of all the payments made to the contractual employees, and that was for the first time which started happening as the initial practice. So this is something basic thing about CEDMAP and my role and my working here. एक्सीलेंट. आपका एक लंबा अनुभव रहा है. आपकी शिक्षा, जैसा आपने बताया, कंपनी सेक्रेटरी में हुई, फिर आपने डेवलपमेंट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, उन सभी तजुर्बों को किस तरह से आप अपने नए रोल में पिरो पाती हैं? और थोड़ा और बताइए कि जहां आत्मनिर्भरता की बात आती है, कुछ एग्जाम्पल्स की, किस विभाग में आपके CEDMAP ने ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई किए और किस तरह की ट्रेनिंग्स और किस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, इस बारे में जानना चाहेंगे हम लोग थोड़ा. See, when you are talking about किस डिपार्टमेंट में हमने CEDMAP के लोग प्रोवाइड किए, तो we have 900 plus गवर्नमेंट क्लाइंट ऑफिसेस, जिसमें हमारे 10,000 प्लस कर्मचारी अभी ऑलरेडी वर्किंग है. तो शायद ही ऐसा कोई ऑफिस या विभाग होगा मध्य प्रदेश सरकार का जहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स कर्मचारी की आवश्यकता है और हमारे कर्मचारी नहीं, सब जगह है. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने पूछी कि क्योंकि आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, डेवलपमेंट सेक्टर का बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, एंड नाउ आई एम डाइवर्जिंग इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर. सो how I am balancing all this. So of course it was in fact I will say that I had the opportunity and it was my opportunity कि मैंने टेबल के दोनों साइड काम किया. In fact all the sides of table, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया हुआ है, डेवलपमेंट सेक्टर में भी एज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड नाउ फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो. तो इन तीनों की जब हम बात करते हैं तो तीनों के डिस्टिंक्ट फीचर्स है. कॉर्पोरेट सेक्टर always has a laser sharp focus on the profit making, efficiency, deliverables, result oriented, and the focus is more on the paying capacity of the consumer. While in development sector, as I told you, our work and our focus is more on the underprivileged, poor, disadvantaged. तो यहाँ पर inclusion, philanthropy and process oriented and people centric approach ज़्यादा होती है as compared to government. लेकिन इन दोनों चीज़ों का benefit ये हुआ कि एक पर्सपेक्टिव में चेंज आ गया. पर्सपेक्टिव में चेंज भी आया, प्लस उस पर्सपेक्टिव को, कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव को जब आप डेवलपमेंट सेक्टर में और गवर्नमेंट में इंक्लूड करते हो तो एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूजन निकल के आता है, विच इज कॉल्ड सोशल एंटरप्राइज.
सोशल एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने काफी काम यहाँ पर कर रहे हैं। काफी चीजें हमारे प्रोजेक्ट्स में जो भी प्लानिंग होती है, वो प्रोजेक्ट्स जब हम कंसीव करते हैं तो थॉट प्रोसेस एक सोशल एंटरप्राइज को लेकर के होता है कि हम प्रॉब्लम, प्रो पुअर, प्रो डिसएडवांटेज्ड एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर डिप्लॉय होगा, उसको लाइवलीहुड मिलेगा। तो उस काम में भी लेकिन आपको जो एफिशिएंसी चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड होने के साथ में जो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, वो लाने की हम कोशिश करते हैं। सो दैट इज एन एडवांटेज प्लस पॉइंट। मैं फॉर्चुनेट बहुत थी कि मैं वो एक्सपीरियंस यहाँ पर ला करके रिजल्ट देने में सफल हुई। और क्योंकि आप जब डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हो तो कुछ एडिशनल चीजें आपको वहां पर नई सीखनी नहीं पड़ती, आपको वो बैकग्राउंड इमीडिएट रिजल्ट देता है और हेल्प करता है आपको आउटपुट देने में। सो इट रियली हेल्प मी। और ट्रेनिंग की बात करें अगर हम, जैसा आपने पूछा कि किस तरह की सेडमैप ट्रेनिंग देता है, बिकॉज जब हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग एक इंटीग्रल पार्ट उसका हो जाता है। तो ट्रेनिंग 4 मेजर कैटेगरीज में अगर मैं ट्रेनिंग को डिवाइड करूँ तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या उद्यमिता विकास की प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, देन मोटिवेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है दैट इज स्थापना या स्टेब्लिशमेंट की ट्रेनिंग, जो कि एक तरह से ऑफिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है गवर्नमेंट ऑफिस में। So this, all the types of training we are providing to the government sector, government employees, and to the youth, to the public, to the women. और अभी तक की जर्नी में मोर देन 12 लाख हम लोग यूथ एंड वुमेन ट्रेन कर चुके हैं इस 35 साल की जर्नी में। और काफ़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी रही है और बहुत डाइवर्स सेक्टर में रही है। और हमारा थोड़ा सा एक बड़ा दायरा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टार्टअप तक सीमित नहीं है कि अगर कोई इनोवेटिव काम कर रहा है तो ही हमारे दायरे में आएगा, तो ही हम उसको ट्रेनिंग या सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। वी टॉक अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस विच मे इंक्लूड स्टार्टअप एंड इनोवेटिव एंड विच मे नॉट इंक्लूड इनोवेटिव बट ओनली ट्रेडिशनल स्टार्टअप। तो हम सब तरह के एंटरप्राइज को प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। सो सक्सेस स्टोरी हमारी छोटी छोटी सी रूरल एरियाज की बहुत सारी निकल करके आती है। सो वी आर हैप्पी कि वी आर वर्किंग एंड वी आर डूइंग जस्टिस विद आवर मैंडेट कि हम पुअर डिसएडवांटेज्ड के लिए हमारा फोकस है। बिकॉज जिसके पेट भरे उन्हें हमारी जरूरत भी नहीं है, हमारी जहां जरूरत है हमको वहीं काम करना है। जी नवनीत जी। जी बहुत खूब। मैंने ये भी पढ़ा था आपके बारे में कि एंड शायद ये आपको बोलने में थोड़ी सी असहजता होगी, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन कि आपने एक टर्न अराउंड किया इस संस्था का इन टर्म्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, रिवैम्पिंग, तो उसके बारे में जरा आप बताना चाहेंगे, एनीथिंग दैट यू लाइक टू शेयर विद अस। सी टर्न अराउंड भी ऑर्गेनाइजेशन का और रीस्ट्रक्चरिंग भी जरूरी हो जाती है वक्त के साथ। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो आप ग्रोथ नहीं दे सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को। एज यू आर अवेयर कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही प्योर खूबसूरत मैंडेट के साथ प्रमोट की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अनफॉर्चुनेटली पिछले मेरे ज्वाइन करने के पिछले कुछ साल, मतलब मेरे ज्वाइन करने से पहले कुछ 5-10 साल से ये बहुत लॉस में थी and it was not able to pay the salaries to the staff also, its own staff also. So the salaries were unpaid for almost 10 months to its staff also. So when I joined it was of course a very big challenge for me क्योंकि एक ऐसी organization जहाँ पर जो self funded है, जो autonomous है, which doesn't receive any funds from the government to run it, और आपको आते साथ पहले पुराना 10 महीने की भी सैलरी देनी है, नई भी देनी है। तो लॉट ऑफ चेंजेस यू नीड टू डू, बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, बदलाव लाना पड़ता है। और जब आप बदलाव लाते हो, चेंजेस करते हो, तो रिनोवेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना, पहले डिमोलिश करो फिर
कंस्ट्रक्ट करो. तो demolition is painful also sometimes, which you don't want, but sometimes you have to change it. और क्योंकि अगर ये बदलाव हम नहीं लाएंगे तो हम जैसे थे उससे कुछ परिस्थिति में भी बदलाव नहीं कर पाएंगे. तो वो परिस्थिति को बदलाव करने के लिए जरूरी है. और बाय गॉड्स ग्रेस उस काम में ईश्वर ने मुझे पूरा सहयोग दिया, टीम ने भी दिया. तो हम लोग July 2021 I joined. At the end of July 21, August onwards we started paying salaries to all the staff. Or December में I paid the salary for the previous 10 months also. So within 4 months I paid the salary of 14 months. And I had made the announcement that I won't take the salary, I won't take my salary till I pay the previous 10 months salary also. तो ईश्वर ने इज्जत रख ली. वो भी जब पे कर दी उसके बाद मैंने सैलरी ली. तो आई हैड बीन सक्सेसफुल इन दैट. बट टर्नओवर बढ़ाना मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट टर्नओवर इज जस्ट बाय प्रोडक्ट. फिगर्स आर जस्ट द नंबर्स. important is the mindset of the people, which is a big challenge. So वर्किंग विद द माइंडसेट और एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना, और उस दौरान बहुत सारी नेगेटिविटीज भी आपको हैंडल करनी पड़ती है. और एज अ सिविल सर्वेंट तो इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप. आपने वो मूवी देखी होगी द वॉक. फिलिप पेटिट हु वाज अ फ्रेंच टाइट रोप वॉकर, जिसने 1974 में ट्विन टॉवर्स पर 135 फीट की हाइट पर विदाउट नेट रोप के ऊपर वॉक किया था. एक सिविल सर्वेंट वैसे ही होता है. तो इट्स बैलेंसिंग बोथ द वर्ल्ड्स. और विदाउट नेट यू हैव टू वॉक ऑन द रोप. बैलेंस भी करना है, आउटपुट भी देना है. एंड सो बट हो जाता है. गिरे तो जाने वाला भी नहीं है. No, amazing. I think it's remarkable, and that is what we are here for. You are watching this special edition of Bureaucrats India Dialogue. With us is Anuradha Singhai, Executive Director of CEDMAP, a unique body in Madhya Pradesh, which has been catering to the livelihood needs of millions of people and has done amazingly well. Anuradha comes from a mix of development and corporate sectors, a trained CS. She has been the turnaround queen of CEDMAP, and we are there at Bureaucrats India. We celebrate such stories of good governance, and we are so honored to have you here, Anuradha ji, today. Moving ahead, you have also been actively involved in CSR activities. And as you rightly said, much of what you do has to do with social enterprise. Now, where do you derive your inspiration from, Anuradha ji, to do so much? Or is CSR something that, because we don't see many company secretaries, getting into that domain. You are in other things more than development, or you have also had the opportunity to represent India at the UNODC. Now, where do you derive these ideas from, and how have you infused those learnings and ideas into what you're doing today? आपने बहुत सारी चीजें एक साथ पूछ ली. Anyways, I'll tell you. From where do I derive my inspiration? I by nature is a very curious person, and I always feel कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ. जितनी इस यूनिवर्स में ग्रेविटी है एट प्रेजेंट, उस ग्रेविटी से अगर थोड़ी सी भी ज्यादा ग्रेविटी होती तो शायद प्लैनेट्स एक दूसरे को रिपेल करके बहुत तेजी से यूनिवर्स एक्सपांड कर गया होता. जितनी उससे अगर कम होती जितनी है अभी उससे, तो शायद सारे प्लैनेट्स जुड़ करके एक लंप फॉर्म कर लिया होता. अगर एक मिट्टी से अपने आप घड़ा भी नहीं बन सकता है, तो ह्यूमन बॉडी जितना कॉम्प्लेक्स मशीन कैसे बन सकती है. ये बहुत मेरे लिए
पहली रही हमेशा, और ये क्वेस्ट को सुलझाने के लिए मैं हमेशा बहुत एक्सप्लोर करती रही कि हम क्यों है, अगर इसके पीछे कोई क्रिएटर है तो उस क्रिएटर ने क्यों बनाया है हमें, हमको यहाँ पर क्यों इस दुनिया में भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है। एंड इन दिस क्वेस्ट आई ट्राई टू लर्न थिंग्स, और मैं चीजें सीखने की कोशिश करती हूँ। आई लर्न फ्रॉम एवरीबडी एंड एवरीथिंग, जिनसे मैं इंटरेक्ट करती हूँ, जिनसे मैं मिलती हूँ, स्पेशली द इंडियन स्क्रिप्चर्स, जहाँ से मैं ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ। जो हमारे उपनिषद है, जो एक रैशनल थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जो उपनिषद प्रश्न और उत्तर पर ही बेस्ड रहते हैं कि आप क्वेश्चन करिए, पूछिए, लॉजिकली सोचिए, डीप डाइविंग करिए हर चीज में। तो वो जो डीप डाइविंग वाला नेचर है, वो वहां से कहीं आता है कि नहीं, हर चीज के अंदर एकदम डेप्थ तक जाना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ कैन वी इम्प्रूव इट। एंड फीमेल्स बाय नेचर थोड़ी एम्पैथेटिक होती है, व्हेन दे सी प्रॉब्लम्स अराउंड देम दे फील कि मैं क्या कर सकती हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, हाउ कैन आई सॉल्व इट, हाउ कैन आई improvise the situation, how can I do something better, how can I help somebody। तो आइडियाज आने लग जाते हैं कि अच्छा, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच प्रॉब्लम से आती है, और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंस्पिरेशन डीप डाइविंग से आती है। तो वो सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच से ही बिजनेस आइडिएशन होता है, और वहीं से बिजनेसेस, आई मीन सोशल एंटरप्राइज या जितने भी हम बिजनेसेस की बात करते हैं, क्योंकि जब आपने प्रॉब्लम्स की बात करी तो उन प्रॉब्लम्स से डिमांड एनालिसिस हो गया, गैप एनालिसिस हो गया, और उन गैप और डिमांड के ऊपर आपका बिजनेस आइडिएशन हो गया। तो नो रॉकेट साइंस नवनीत जी, इट्स जस्ट सिंपल थिंग्स, दिस आर वेरी सिंपल थिंग्स, और हो जाता है बस, नथिंग सो ग्रेट, मतलब हो जाती है चीजें जी। और सीएसआर की आपने जैसे बात कही, तो सीएसआर, आई स्टिल रिमेम्बर 2013 कंपनीज एक्ट में जब सीएसआर को मैंडेटरी किया था गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, तो एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड उन्होंने यूज किया था जिस चीज के लिए इसे शुरू किया था, मैंडेटरी किया था, दैट वाज नेशन बिल्डिंग। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशन बिल्डिंग, मतलब इट इज नॉट philanthropy, इट इज नॉट डोनेशन, इट इज नॉट वन ऑफ एक्टिविटी, इट इज नेशन बिल्डिंग एंड अ सस्टेनेबल एक्टिविटी। तो क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर में भी मैं रही हुई हूँ, एग्जीक्यूशन में रही हुई हूँ, और कॉर्पोरेट सेक्टर का माइंडसेट भी मैं समझती हूँ, बट कॉर्पोरेट सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर का एक ब्यूटीफुल फ्यूजन ही सीएसआर था, जिसको गवर्नमेंट ने लेकर के आई और मैंडेटरी किया। एंड व्हेन आई वर्कड इन द सीएसआर सेक्टर आल्सो एज अ प्रोफेशनल आल्सो एंड एज अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल ऑल्सो, जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो प्रपोजल्स या प्रोजेक्ट्स कंसीव करने की जब बारी आती है, क्योंकि शेड्यूल 7 हैज लॉट ऑफ सेक्टर्स, आप 12 प्लस सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स, राइट फ्रॉम एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, पोवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, इवन अबव दैट आप कंजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट, और स्पोर्ट्स, स्लम डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डिजास्टर, मतलब इतना वास्ट अरीना दिया हुआ है। उस पर आपको जब प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज करना है, और उसमें जब आप एक एम्पैथेटिक कंपोनेंट डालते हैं कि हाउ कैन आई सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हाउ कैन आई help in building the nation with the laser sharp focus of the corporate sector and utilizing their funds। तो एक बहुत अच्छा सा चीज निकल के आती है, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कुछ डेवलप होते हैं। और कुछ एक अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी, मतलब रूटीन प्रोजेक्ट्स तो हम लोगों ने लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर और कई सेक्टर्स में की ही है, बट आई स्टिल रिमेम्बर वन वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट विच वाज बेसिकली कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लाई ऐश से सैंड डेवलप करना चाह रही थी, और फ्लाई ऐश डिस्पोजल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और उन्होंने उस प्रॉब्लम को सैंड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ साइंटिफिक रिसर्च वगैरह भी स्पॉन्सर की, आई मीन अंडर दैट सीएसआर प्रोजेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज जो बहुत डिफरेंट होती है, वो एक
एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है, उसका मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सीखने की, करने की. सो आई वाज क्वाइट फॉर्चुनेट इनफ कि इन सब चीज़ों पर और इतने सब प्रोफेशनल्स के साथ में, एक्सपर्ट्स के साथ में काम करने का मौका मिला मुझे. Ji, जी. coming to specifics, Anuradha ji, could you share your experiences of representing India at the United Nations Office on Drug and Crime, and the Center for Promotion of Imports for the Netherlands? Right. So this United Nations Office of Drug and Crime has and the United Nations Convention Against Corruption, UNCAC. So they conduct workshop on anti-corruption and its review mechanism. I was fortunate enough to be part of that program in 2014, wherein 14 plus countries came through their 60 plus representatives. It was a multi-stakeholder review meet where the representatives of government as well as civil society were present. So the objective was to formulate a review mechanism on the anti-corruption convention. So now this anti-corruption convention is a convention of United Nations, which is signed by 190 plus countries. And it is the only legal agreement which is binding on 190 plus countries who are the signatories of this convention. So it was one of the very great opportunity to be part of that review team who develops the mechanism to how to stop the corruption. So it was very good experience to share the good practices, to understand the approach and the strategies of different countries, how they are tackling the corruption, and to work jointly also with such a different varied team of different countries, people coming from different culture, and corruption also happening in very different ways and tackling also in very different ways. And some few very interesting things came up, like how e-governance can up to a large extent reduce corruption when we reduce the human intervention, and a lot of other good practices also which we shared. So it was a very, very different and unique experience, and a lot of things to learn and then replicate here in the country and disseminate amongst the public. Now, talking about Center for Promotion of Imports, whose Dutch abbreviation is CBI. It is the Dutch abbreviation of Center for Promotion of Imports. It is a body of Ministry of Netherlands, and who are working basically on import promotion. So they promote import in the European countries. So they basically conduct the programs and workshops, and they call the representatives, especially the civil society representatives from the developing countries, to train them on what are the import norms. And Europe is considered to be the most tough geography, the toughest geography to export, because the norms and the standards are very, very stringent, very high norms they do have. And if you are able to export to Europe, then it is said that you can export to any country, any geography, because you have already complied with such stringent norms and standard certifications. So I learned a lot of good things there. It was an eye opener because they started from a very, very, very minute thing, like the export readiness checker. We started with the export audit of the firm, whether the firm or the organization is export ready or not, and then how to develop a market entry strategy in a particular country, because Europe is again a diverse economy with diverse countries. So country specific market entry strategy, how we are going to develop, how the trade fair plannings are done, how the market research is done, how the product research is done, how the pricing is decided, how the distribution channels are explored, and finally, how can you export your product to the European countries. And interestingly, I represented India 3 times on that platform on different
types of activities. So I try to basically take my learnings and replicate here. And when we talk about the social enterprise, we also think of those European norms, whether they want to export or not export, because right now the Indian market itself, domestic market, is a very huge market. So earlier, while we were planning of the export market entry strategy, now we are talking more of India entry strategy, because all the major companies worldwide are coming to India. And when we say that India's population is a threat, they say that it's a market, it's a big opportunity. So it's the perspective, it's their perspective that they consider Indian population as a opportunity, as a market, so rather than considering it as a threat. So when we are talking about the Indian market also, we try that whenever we develop some social enterprise, or we mentor, or we provide some guidance to some companies, the standard and norms, even though not exporting to Europe or exporting to Europe, it should be of that benchmark. So that has certainly helped, because all types of learning do help you finally. So it was quite interesting. And it's true that I'm really fortunate that I got opportunity to learn from different types of people at different platform. I learned from farmers also, because we worked in agri sector also. So right from the grassroots level to the international forum, this flexible and this varied type of experience helped me, and finally it helped in the turnaround of the organization which I join, or which I take do some work for the public, basically. Great. Yes. Excellent. So, do you think, Anuradha ji, this also, your joining this also, kind of indicates a shift in our culture, as far as bureaucracy is concerned, So there are people from making lateral entry, Honorable Prime Minister has created that system of lateral entry. And that certainly is enriching the whole bureaucratic dynamics and the setup. What is your opinion on this? Yeah, that's true. I have a lot of respect for the Indian administrative services. I mean, they are the brightest of the brains which we have in India. But there are certain other category of technocrats also, who anyhow did not appear for the UPSC, or could not enter, or could not clear, but could make significant difference in the system, which was very well understood by Honorable Prime Minister also. And that is how the concept of lateral entry started. And with this diverse background and experience and a mix, it really helped. It really helped the government sector and the development sector. So I think it's a good shift. It's a good move and a welcome move. Excellent. So we'll have certainly to learn a lot from you as far as the turnaround story. As you know, Bureaucrats India is an initiative of the parent company Grey Matters Communications, and we have also been trying to revamp, reorient in terms of change of approach, and your ideas certainly inspire us a great deal. What are the future planning you have for CEDMAP, Anuradha ji? See, the future planning is all about the livelihoods. Right now, the population of Madhya Pradesh is approximately 9 crores. And if I'm talking about the unemployed youth, that is somewhere around 41 lakhs. And if I include the numbers which are already in job or already doing something but not fully satisfied, so I can double this number of unemployed. So maybe somewhere around 1 crore. So the focus is how we can almost eradicate unemployment in next 2 years. So that is the target. And when we are saying that we'll work on unemployment or livelihood, it means with those people who really want to do something. I'm not talking about those who doesn't want to do anything, because you can take the horse to the water, but you cannot make it drink water.
So mission livelihood is, of course, the major agenda, and it will include a mix of both the jobs and the enterprise creation, entrepreneurship development. Of course, we have limited number of jobs, and we are looking at creating more jobs by creating more enterprises, because once more enterprises are created, more number of jobs will be created. And even in the jobs, I'll say that there is no dearth of jobs for the right candidate, but the uh, what is missing is the right attitude. I won't say that there is a skill gap. Of course, at times there is skill gap, but government is doing so much in the skill sector. People are also coming up with the skill, but it is more of the attitude gap. Because whenever you see, candidate going for interview, the first thing he's saying that I want this. These are my needs. While the organization expects that what you can deliver to the organization, how much you can do. So that shift is also required in jobs. So we want to work majorly on two things. One is the mindset of the youth, and other is the creation of more enterprise. So we can have more entrepreneurs also, as well as we can have more jobs also. And in all the sectors. So when I am talking about the districts of Madhya Pradesh, so it is geographically and sectorally, we are going to do the mapping that where is the demand, in which services and in which goods. So again, another important thing is not just creation of the enterprise or entrepreneur. The important thing is the sustainability of that entrepreneur, which means we need to give them market. So the focus is going to be on the market linkages also. So we'll be focusing more on providing market linkages to the entrepreneur and the enterprise so that it sustains. So the mapping, the mindset, the market linkages, and with all this scientific work going on, the objective is to completely eradicate unemployment. That is a quite ambitious target, but it is of course a doable target, because with so many multiple sectors and large employment providing sectors also, like the agri and allied sectors, supply chain, logistics, rural sector, then we have wellness industry also, we have tourism. So I find tourism also very interesting because it has huge potential. So when we explore these things, and when we create some enterprises, some interesting enterprises, then we cater to jobs also, and we cater to the creation of enterprise also. So that is what we are trying to focus, and let's hope for the best. Excellent. I'm sure with your kind of conviction and clarity, uh, uh, you will certainly be able to achieve. Last two quick questions, Anuradha ji. What is Anuradha Singhai doing when she is not doing CEDMAP or CSR or CS? Okay. See, I have love and passion for the Indian scriptures, ancient Indian scriptures. So मैं YouTube पर उनको सुनती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, और as I told you, I'm a very curious person. I want to know more. I want to explore. I want to know myself. Before knowing anything else, I want to know myself, who I am, why I am here on this earth, why there is this universe. So I find this very fascinating, very interesting. So I try to deep dive into some of the ancient Indian scripture. It's huge. I can't even explore it in 4 or 5 lives also, but I try to take some few drops of it, and that is how I spend my rest of the time when I'm not working. Apart from spending time with family and friends, that of course I do, but uh, when I'm not with anybody, when I'm not working, then I love just listening and reading this type of stuff. Yeah. Excellent.
And one last message for Team Bureaucrats India, Anuradha ji. Yeah, so first of all, congratulations, because you are doing a really great job. And Bureaucrats India has been into this sector for quite a long time, and they had been basically into this bureaucratic setup and talking to the unsung heroes and delving into the lives and sharing the good practices. So this is something great which you are doing. And when we watch your YouTube channel, we learn a lot from the other personalities. So that is really a very good insight which you are giving into the lives of the bureaucrats and the latest updates which you are sharing in the segment. So I wish you all the best, and I wish that you keep on motivating all of us like this forever, and I wish you grand success. Thank you. Thank you so much. This is Anuradha Singhai for you, the Executive Director of CEDMAP, Center for Entrepreneurship Development of Madhya Pradesh. And this is also special because she's the first technocrat to have joined this interview. And I thank you for that, ma'am. We wish you continued success. We shall keep coming back to you to learn from you, to get inspiration from you, to learn a bit more on the scriptures. Thank you very much for your time. And thank you to all those who were watching this or watching now on the YouTube. This is Navneet Anand for you, signing off for Bureaucrats India today. Namaskar and Jai Hind. Thank you.